कृपामुनित्वं शरणं वृन्दे नमस्ते करुणावृन्दे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष तिथि है। वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव तिथि में उनको स्मरण करना अवश्य कर्तव्य का बीच में आता है। इसलिए इनका स्मरण से ही मंगल होता है। जो आप साधन करके नहीं प्राप्त कर सकता है, वो लोगों का कृपा से वो अनायास संभव होता है। आज जिनका भक्ति थी, उन्होंने हमारा शिक्षा गुरु परम पूज्य श्रीमद भक्ति श्रीरूप सिद्धांति महाराज करते थे। सिद्धांति महाराज बड़ा स्पष्ट वक्ता था। सब मतवाद खंडन उन्होंने खुला खुली करते थे। ऐसा नहीं थोड़ा इधर उधर कर। इसलिए जहाँ ही जाता है लोग विरोध होता है, विरोध करते हैं। तो उसमें बहुत सेक्रेटरी बोला, सिद्ध स्वरूप उनका नाम था, ब्रह्मचारी नाम सिद्ध स्वरूप। सिद्ध स्वरूप जैसे प्रचार किया और इसमें प्रचार किया जाएगा। तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला, वो जो बात तो बोला सही, हमारा जवान से ऐसा बात निकलेगा नहीं। ये तो लाख रुपया का काम कर दिया, इतना बड़ा प्रचार किया। तो इसलिए गौर आविर्भाव तिथि में इनका एक आशीर्वाद दो। सिद्धांत बागिश ऐसा बड़ा जोर शोर से बोलते थे। पहले पतला था, बाद में खूब मोटा हो गया। तो उनका वहाँ उन्होंने मुझको जो दफा बात बोला था, एक दो दफा बोला, हमारा कोई मूर्ति जयपुर से लाया था, उसमें थोड़ा से अंग हानि हुआ, इसलिए मैं उनका कंपनसेशन लेंगे रेलवे से। तो उन्होंने मुझे बोला, ये आशा छोड़ दो, रेलवे से पैसा लेना बड़ा मुश्किल है, दूसरी को बोलो मूर्ति का अनुकूल करे, वो मूर्ति ये करो। ये तो 7 पांव जोड़े नीचे आते, ऐसा उनकी भाषा। बाद में मैंने उसका तदबीर करके वो पैसा वसूल कर लिया। तो बोला, तुमने जम घर से लुटा के लाया, ऐसा बात इसलिए ये बोला, वो जाता नहीं। और जब प्रभुपाद का आविर्भाव सब के लिए मामला किया, तब उन्होंने मुझे बोला, नरसिंह कवच धारण करना
ये लोग तुम्हारा ऊपर ये करेगा। तो मैंने उनको ये बात पालन नहीं कर सका। हमने विचार किया, यदि मैं शरणागत और हमारा चेष्टा जब भगवान के लिए हो, उन्होंने जब हमारा सेवा लेंगे, उन्होंने हमारा रक्षा करेंगे, मैं अलग करके रक्षा करने के लिए कोशिश क्यों करो। बाद में जब हुआ तब उन्होंने बड़ा प्रसन्न हुआ। सबसे पहले उन्होंने 1000 रुपया दिया वो मंदिर के लिए। ये लोग प्रचार में गया था सिलेट। उस वक्त इन्होंने मतवाद खंडन करने पे जाकर जैमिनी, पतंजलि, ये सब शंकराचार्य, ये सब को खंडन किया मतवाद। तब उसमें लोग नाराज हुआ। रात 10 बजे के बाद हैंडबिल छपाया गौरी मठ का विरुद्ध में। तब वहाँ का जो लोग था वो बोला, आप लोग इसको मीटिंग को बंद करो। तो गुरुजी ने बोला, मीटिंग बंद करना ठीक नहीं है, आज वो बोलेगा नहीं, हम लोग बोलेंगे। और उसी दिन जज साहब सभापति वंदना शुरू किया करने का पहले ही जज ने सिलेट वासी को बहुत तारीफ किया। ये लोग आतिथ्य अच्छा करते हैं, अतिथि का ऊपर कोई अन्याय होगा नहीं, ऐसा करके उनको यही कर। बाद में महाराज गुरु महाराज बक्तिता दिया। उसका बाद लास्ट में श्रीधर महाराज जी बक्तिता दिया। उन्होंने क्या बोला, हम लोग घंटा लगा के प्रचार करने के लिए नहीं आया। जहाँ जैमिनी, पतंजल सबका खंडन करते हैं तो वहाँ भंडार कर ऐसा बोलते हैं। हम लोग जो प्रचार करता हूँ, यदि कोई खंडन करे मैं वहाँ सरेंडर करूँगा, और यदि खंडन ना कर सके उनको सरेंडर करने पड़ेगा, ऐसा बोल दिया। बोलने के बाद खूब क्लैपिंग होने लगा। 3 दिन का प्रोग्राम था, ये बढ़ के 1 महीना हो गया। ऐसा प्रचार एक कर दीजिए। हेलो, साफ जाएगा नहीं, उन्होंने उनका प्रचार ही ऐसा है। सब लोग एक करें, लेकिन ये सब तो प्रचार किया, आखिर में प्रचार बंद किया। उनका मठ में उत्सव में ज्यादा आइटम कभी बनेगा नहीं, लेकिन जितना बनाएगा ये उत्तम बनाएगा। झिमझाम उत्सव ज्यादा नहीं, और आदमी भी ज्यादा बुलाता नहीं, ऐसा नियम था। तो फिर उन्होंने आखिर में एक महान काम करके किया, जो गोविंद वत्स, जो जिसके लिए गलता गोदी जयपुर में वो विचार हुआ, जिसलिए गौड़ी और वैष्णव का भागवत का भाष्य है, गीता का भाष्य है, और वेदांत का भाष्य नहीं। इसीलिए इसको शाश्वत संप्रदाय माना जाएगा। तो जयपुर राजा था,
विश्वनाथ चक्रवर्ती का शिष्य, उन्होंने पत्र लिख के भेजा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती वार्धक्यवश जाने में असमर्थ, कोई जाने का सुविधा उस वक्त ऐसा नहीं था। बलदेव विद्याभूषण उनका शिक्षा शिष्य और इनको एक शिष्य, ये दोनों गया। तो बोला चैतन्य महाप्रभु भागवत को वेदांत का अकृत्रिम भाष्य बताया, इसलिए भागवत ही उनको भाष्य। आज जो भागवत रचयिता उन्होंने बोला अर्थयम ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्र वेदांत का अर्थ ही भागवत, भारतार्थ विनिर्णय, महाभारत का अर्थ को विशेष रूप में इसमें निर्णय किया गया है। गायत्री भाष्य रूप, ये गायत्री का भाष्य है। वेदार्थ परिवृंहित, वेद का अर्थ यहाँ विस्तार किया है। तो इसका भाष्य को क्या जरूरत है? बोला नहीं, तब भी इसका जरूरत है। तो अब बलदेव विद्याभूषण गोविंद मंदिर में गया, वहां जाके प्रणाम किया। महाप्रभु सब विग्रह में गोविंद देव है। तो एक भाष्य पढ़ने से हमारा गुरुभावज्ञ दोष तो लगेगा नहीं, इसलिए गोविंद मंदिर में प्रणाम किया, गोविंद को माला दीर किया। तब उन्होंने वहां शुरू किया, इसलिए नाम लिया गोविंद भाष्य। गोविंद देव मुझे जो बुलाता है वही मुझे देखेंगे। तब उन्होंने गोविंद भाष्य करके एक राधा गोविंद का जो विग्रह बहुत हमें बीच में रखा। पहले वो लोग देखो पढ़ने देता नहीं था, सम सुंदर, इसीलिए उन्होंने भाष्य किया था। और वही भाष्य आज विश्व में प्रचारित है। ऑक्सफोर्ड में इसको पढ़ाता है इंग्लिश ट्रांसलेशन। यहाँ एक व्यक्ति गया था वहाँ ट्रेनिंग के लिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय से। उनका नाम था सुधीर बरन घोष। उन्होंने जाकर देख के हैरान रह गया कि एक गोविंद भाष्य इसमें है, और वो इंग्लिश ट्रांसलेशन हम पढ़ रहा है, ओरिजिनल हमारा वहाँ है। तो उन्होंने आकर इसको पढ़ने के लिए इच्छा किया। जब पढ़ने के लिए इच्छा किया, पढ़ाएगा कौन? तो एक महात्मा उनको पढ़ाया। तो महात्मा जो पढ़ाते थे साथ साथ चैतन्य चरितामृत का प्यार भी बोलते थे। बोले ये किसका है, कहाँ से बोल रहा है? बोले चैतन्य चरितामृत है। इसलिए चैतन्य चरितामृत का बात उसमें प्रभाव। इसी को ही कोई बलदेव विद्याभूषण का जो भाष्य, इसका साथ चैतन्य चरितामृत जो उल्लेख किया कविराज गोस्वामी का पाया, ऐसा दे करके ही उन्होंने वेदांत सूत्र को प्रकाशित किया। बहुत परिश्रम किया, प्रूफ रीडिंग किया था श्रुति महाराज, ऐसा किया। आस्ते उद्धव संवाद जो भारती महाराज किया था, इनको पुनः प्रकाशित किया।
ये उनका शेष अवदान गोविंद वत्स वेदांत का। तो ये सब प्रभुपाद का निज जन। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती, इन्होंने शिष्य करेंगे नहीं, प्रचार करेंगे नहीं, लेकिन उनका पंचतत्व गुरुपाद, उनका गुरुपाद पद्म ठाकुर भक्ति विनोद उनको आदेश किया कि तुमने प्रचार करो, महाप्रभु का वाणी प्रचार करने के लिए तुम उपयुक्त है। तब उन्होंने उसका पहले 10 साल उन्होंने गोग्रास में भोजन किया, 100 करोड़ नाम किया। उसका बाद ही ये स्वप्न नहीं सुना। तब उन्होंने बोला हमारे पास धन भी नहीं, जौन भी नहीं। तब बोला कि हम लोग धन भी देंगे, जौन भी देंगे, किसी का अभाव होगा नहीं। तब उनका पास एक एक करके सब आने लगा। इसीलिए ये लोग जो आया, ये महाप्रभु का प्रेरित तो जान। एक कैसे आया, कोई आया कॉलेज में पढ़ते थे और वही भाषण सुना, ये पूर्णम जदित उन्मृत्युजाव निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतस्सा। यही बात सुन करके तथा शेष होने का वक्त उनका पास आया कि आपने जो जोर दिया, घर में आग लगने से भी वो इसको बुझाने के लिए कोशिश नहीं करके आ जाना। एक आग बंद करेगा नहीं ना, आग बंद करने के लिए जाओगे, यदि वहीं मौत हो जाए तो भजन होगा। ऐसा सब आने लगा एक एक पर। तो उन्होंने सब सेनापति द्वारा सबको जय किया। महाप्रभु 2 सेनापति रूप सनातन 2 सेनापति द्वारा सब कोई लो जय। तो यहाँ प्रभुपाद का बहुत सेनापति दे दिया। इसलिए इन्होंने ये जो प्रचार विश्व में किया। और महाप्रभु का जो वाणी है चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में उल्लेख है, पृथ्वीते आचे जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। भक्तिमान ठाकुर लिखा इंग्लिश ग्रंथ जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में देखा, चैतन्य जी अरे सब विश्व में जितना यूनिवर्सिटी है ये सब स्थान पर भेजा। बाद में भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने उन्होंने प्रचार किया। उनको पहले बोला था ये लोग प्रचार में जाता है, इनका साथ जाओ, तुम्हारा कोई रिलेशन वगैरह तुम्हारा साथ नहीं करता है, साथ नहीं देता, जाओ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। तो उन्होंने किया नहीं। बाद में पश्चाताप हुआ, मैंने गुरु वचन को उल्लंघन किया, इसीलिए हमारा ये दुर्गति। फिर उन्होंने किया प्रचार करने के। अभी जब स्वामी महाराज यहाँ गया वो तो उस वक्त वो लोग जाकर के यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी से वो किताब को लिया और नूतन प्रोड्यूस किया।
श्री चैतन्य महाप्रभु लाइफ एंड प्रिसेप्ट ग्रंथ का नाम। तो आज जो विश्व में हर एक स्थान पर लोग यही जानता है। एक आया था तो वहां वेदांत पढ़ा था, तो मैंने उनको बोला वेदांत का प्रथम सूत्र क्या है, उसने बराबर उत्तर दिया। आखिरी सूत्र क्या है वो भी बराबर बोला। कथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो बोलता है मैं उसको पढ़ाता। तो बात होता है ऐसा सेनापति से विश्व में प्रचार किया, गांव गांव में सब जगह में। जाने आने का इतना सुविधा नहीं था। स्वामी महाराज गया था पानी जहाज में, सुमोती देसाई का, उनको फ्री खाने का रेशन वगैरह सब फ्री दिया था। और उन्होंने कोची विमानबंदर से, कोई विमानबंदर तो नहीं, जहाज वहां से ही उठा था। इसमें भी ये सब महाप्रभु ये सब द्वारा ही प्रचार किया। एक एक करके सब लोग आने लगा, जो ही आया वही मठ में रह गया नहीं। एक एक करके सब विराट मिशन बन गया। और आज तो यहाँ और बढ़ गया। तो उनमें इन्होंने एक सेनापति अपना अपना तरीका से प्रचार किया है। जैसे अच्छा रसोई करने वाला बनाता है लाफड़ा सब्जी, उसमें चीनी भी देता है और गुड़ भी देता है, मीठा भी देता है। सब कुछ मिलाकर एक स्वादिष्ट बनता है। मीठा और चीनी मिल है, उनको भी मिल कराया। इसमें भी सब रकम प्रचारक करता रहा, सब तरीका से प्रचार कर दिया। तो विरुद्ध किया, आखिर में वही अनुभूत हुआ। विरुद्ध करने के लिए आया था, वो भी शिष्य बन के प्रचारक बना, जैसे नमी महाराज। अच्छा, इसी में भी तो आज उनका तिथि है, उनका चरण में प्रणत होकर उनका की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कथा में बड़ा जोर बोलते थे, हमको भी ऐसा ही 2-3 दफा बोला। जब स्थान मिल गया तब उन्होंने बोला, तुमने शेर का मुख से निकाल के लाया? बोले महाराज हमने निकाल के लाया नहीं, हमारा कहाँ साध्य है, ये आप लोगों का कृपा है, आप लोगों का गुरुपाद पद्म का स्थान है, इसको लाया। और यहाँ ही प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु मायापुर में आविर्भूत होकर उन्होंने सारा भारत को प्रचार किया। आनंद में प्रेम धर्म प्रचार किया पूरी से। आज प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वही प्रेम संपोट पूरी में आविर्भूत होकर प्राप्त करके उन्होंने विश्व में प्रचार कराया। तो इसीलिए इसमें हमारा क्या है, मैं सिर्फ
वो निमित्त होकर एक कोर्ट केस किया। तो अभी भी एक सुसंवाद है, वहाँ जो लोग रहता था इस गेट में, उसको भी निकाल दिया। अभी साफ हो गया, इधर से जाओ उधर जाओ, क्लियर, दरजा बंद। कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Hare Krishna, Krishna Krishna. Advisory of friends. By remembering them, we will get everything auspicious. But the thing which can't be attained by performing different kinds of sadhana can easily be obtained only by the mercy of these Vaishnavas. Today, the personality whose appearance day is today, he is my Siksha Guru, Param Puja Pad Shri Srimad Bhakti Srila Bhakti Srirupa Siddhanti Gosvami Maharaja. Siddhanti Gosvami Maharaj is a very strong preacher. He used to blast all different preachers, those who are kind of Mayavadis. He never compromises with his way of preaching. Wherever he goes, people they go against him many times because of his teachings, because of his local people they go against his preaching. Before his name was Siddha Swarup. When he was brahmachari, his name was Siddha Swarup. Prabhupada said that the preaching done by Siddha Swarup, no one can do such a kind of preaching. Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, whatever Siddha Swarup said, everything is correct. But we people can never speak such a straightforward way of Harikatha, which he did. On the Gaura Virbhav Tithi, Srila Prabhupada desired to give him Gaura Ashirvad because of his strong preaching, and he gave him the title Siddhanta Balish. He used to speak very loudly and very strongly. Where before he was very thin, and later he became very fat. At his place, he has said two very important things. One, the deities which were brought from Jaipur, there was a small mistake in the deity. That time I got chance to serve him to take compensation from the railways, but Srila Siddhanti Maharaj told me that you forget to take any money from the railways because it is impossible. He was a fearless preacher. Later, I went to the railways and I collected the money. And Srila Maharaj said, you brought the money back from the hell, from the house of hell. When we were having court case to get the land of the appearance place of Srila Prabhupada, that time Srila Siddhanti Maharaj advised me to wear Narsimha Kavacha because these people will do anything on you. That time I could not follow his instructions.
I was thinking, that time I could not follow his instructions because I was thinking, if I am a really surrendered soul, and if all my efforts are for the pleasure of Supreme Lord, then if he wants to accept my service, then definitely he will look after me, he will take care of me. Why should I make other things for my own protection? Later, when we got that land, he was very happy that time. He was the first person to give donation when we got the land, 1000 Indian rupees at that time, to find the construction of the temple. They all went to Sylhet for preaching that time. He used to go and bless the speakers of a different other followers like Gemini and Patanjali, even Shankaracharya philosophy. He has blasted all these philosophies, and many people got angry at that time. After 10 p.m., they published handbills against Gaudiya Math. And the local people of that area, they said that it is good that you stop this program here itself. Our Param Gurudev Srila Bhakti Srirupa Gosvami Maharaja said it is not good to stop the meeting, but today Siddhanti Maharaj will not speak Harikatha. Today we will speak Harikatha. And that day, and the Sabhapati, the chairperson was our Param Gurudev. Judge was the chairperson. And before starting his one Mangalacharan, he started to praise the people of Sylhet. He, in a soft way, is consoling people. Later, our Param Gurudev gave Harikatha. At the end, Sridhar Goswami Maharaj gave Harikatha. In his Harikatha, what he said, we are not a person who is preaching foolishly, where a person can blast the teachings of Gemini, Patanjali and Shankaracharya, all this, how he can be a normal preacher. Whatever we are preaching, if someone can defeat our philosophy, then I will surrender to that person who has defeated our philosophy. If they can't defeat our philosophy, they should follow our philosophy. And after that, the program was extended and it went to 1 full month. That kind of preaching was done at that time. In all the places, his preaching was that strong. Everyone liked it. But all of them, they did preaching. Later they stopped preaching. In their mat, when they were preaching, they never used to make more items. Whatever they used to make, they always used to cook the best food in the feast of their mat. But they used to cook less, and they never called many people for the feast. They had such kind of rule for themselves. Means they used to call little people and cook very nice prasadam and feed them. And the end, he has done a very good and big work for all of us. Govinda Bhashya in Jaipur, when there was a debate, there was a discussion that Gaudiya Vaishnavas, they have commentary on Bhagavad Gita, Bhagavad, but they don't have any commentary on Vedanta. So it is not accepted as a bona fide sampradaya.
the king of Jaipur, was the disciple of Srila Vishwanath Chakravarti. He wrote a letter to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Then Srila Vishwanath Chakravarti was, because of his old age, he is unable to travel that time, because that time the facilities were not that good where person can travel so easily. Then Baladev Vidyabhushan, who is the Siksha disciple of Srila Vishwanath Chakravarti, they both went there and said that Sri Chaitanya Mahaprabhu, that Sri Chaitanya Mahaprabhu said Bhagavatam is non-different commentary of Vedanta Sutras as said by Sri Chaitanya Mahaprabhu. And Vedavyas himself, who has written Srimad Bhagavatam, he said in here that the meaning of Vedanta Sutras itself is Bhagavata. The meaning of Mahabharata is very nicely explained in Srimad Bhagavatam, and even it is the commentary of Gayatri. And the meaning of Vedas is very clearly explained here, detailedly explained here. Then when it is done, why we need separate commentary for Vedanta Sutras? But still they said, we still want you to have one commentary on Vedanta Sutras separately. That time Baladev Vidyabhushan, he went to Govindaji temple. There he did pranams. There the deities are there. Govinda Dev is there. He was asking that if I write commentary on this, will it not be an offense against my Guru Parampara? And offered his dandavats. Immediately the garland fell from the neck of Govinda Dev. And it fell from Govinda Dev, understanding it as the mercy of Govinda Dev. So he made it as Govinda Bhashya. He wrote it as Govinda Bhashya. Whatever Govinda wants me to write, that is what I am writing in this commentary. By writing, he gave the commentary and named it as Govinda Bhashya and kept in the lotus feet of Shri Radha Govinda Dev. Before it was not needed, but that time, according to the need of the time, he has done. And that same commentary of Govinda Bhashya, even it is being studied in Oxford University, which is being spread in the whole world. This person, Sudhir Varna Ghosh, he also went and to study in Oxford, and he was shocked to see that Govinda Bhashya is in Oxford. And people, they study on it. And that English translation I am reading originally is in India, and the English translation we are reading. And once he came back, he developed the desire to study this. And when he desired to study this, who will teach him? That time one Mahatma who taught him Govinda Bhashya, along with the Govinda Bhashya, was to teach him Chaitanya Charitamrita. And he was asking, what is this? Then he explained him that it is Chaitanya Charitamrita. Because the teachings of Chaitanya Charitamrita is in Govinda Bhashya also. When the payar of Krishnadas Kaviraj Goswami is explained along with Govinda Bhashya, everything all together, Srila Siddhanti Gosvami Maharaja, he published everything all together. And proofreading that of that time was done by Srila Shrauti Maharaj. Uddhav Samvad.
Srila Bhakti Bhārati Maharaj published, which was republished by Srila Siddhanti Gosvami Maharaj. That was his last and final contribution. And Govinda Bhashya is his last contribution for us. ये सब प्रभुपाद का निज जब They all are the personal associates of Srila Prabhupada. सिद्धांत सरस्वती Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati, शिष्य बनेंगे नहीं he has no desire, no interest in making disciples and not even interested in preaching. But Panchatattva गुरुपाद उनका गुरुपाद का and Gurupad Padma, Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj and Srila Bhaktivinoda Thakur, they gave an instruction to him तुमने प्रचार करो that you preach प्रभुपाद वाणी the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. You are a qualified person to preach. That time, उसका पहले 2 साल before that, for 10 years, विलास में भोजन he had go grass 100 करोड़ नाम and chanted 100 crores of Harinam. उसका बाद ही After that, he had this dream, these instructions from Pranchapatra and all. And in that dream, he was mentioning that I don't have any money or any person, nothing is there. Then Panchatattva, they said, you will not have scarcity of anything, we will give you everything. And that time, slowly, one by one, start to come to Srila Prabhupada. Those whoever came to Srila Prabhupada, they all are inspired by Sriman Mahaprabhu. कैसे आया कोई आया कॉलेज Some people, how they came? One came, they were reading in the college. भाषण सुना He heard the Harikatha, in which he was mentioning Turnam. निश्चयताय विषय भरो सर्वतस्सा यही बात सुन करके As he heard this word, सुनने का मौका तो उनका पास आया after Harikatha is finished, they came to him and said, you insisted, saying that even we have a fire in our house, then also we should not stop the fire, you should come immediately. एक आग बंद करेगा नहीं We should not stop the fire. Prabhupada said, no. If you go to stop the fire and if you die at that very place, how you will perform bhajan? ऐसा सब आने लगा है In this way, they are inspired by all these kind of teachings and they start to come to Srila Prabhupada. सेनापति द्वारा सबको जय किया Prabhupada, through his army chief members, he conquered everyone. And Sri Chaitanya Mahaprabhu, by his two army group and Sanatan, he has conquered everything. And but Prabhupada, he got so many army chief and they preached all over the world. और महाप्रभु का जो वाणी है And the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu in Chaitanya Charitamrita and Chaitanya Bhagavati, it is explained. आते जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हरि वे मोहन भक्ति में ठाकुर ने देखा Srila Bhaktivinoda Thakur wrote इंग्लिश ग्रंथ in English, जो चैतन्य महाप्रभु का बारे में देखा in which he mentioned about Sri Chaitanya Mahaprabhu. He has written about Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य जी अरे सब विश्व में जितना यूनिवर्सिटी है And in all the universities all over the world, that book was sent in all the places. Later, तो भक्ति वेदांत स्वामी महाराज later Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he preached a lot. जाता है इनका साथ जाओ Before Srila Prabhupada instructed him that these people, they are going for preaching, you go, because all your relatives, none of the people, they don't pay attention to you, so you go with your god brothers who are going for preaching. That time he did not go, but later he felt very bad that I did not follow the instructions of my Gurudev, though today my position is like this. Later he decided to go and preach. When Srila Swami Maharaj, उस वक्त वो लोग जाकर के यूनिवर्सिटी before Swami Maharaj, they all went to दिया
went there and then distributed the books in the name of Sri Chaitanya Mahaprabhu life and precepts written by Srila Bhaktivinoda Thakur. And in this whole world, they all know Sri Chaitanya Mahaprabhu. One came, he read Vedanta there. I told him, what is the first equation of Vedanta? He said very clearly. I asked him, what is the last one? He said correctly. Atato Brahma Jigyasa. He says that I read it there. The thing is, all these army chief of Prabhupada, the message was spread in the whole world. Each and every village and every city, everywhere it was spread. That time, even though facilities were not that good, Srila Swami Maharaj, he went in the ship. Sumati Desai, she gave him, he arranged for him to go. And from Kochi harbor, from there he took the ship. In this way, through all his Vaishnavas, all these associates, he preached. Slowly, one by one start to come. Whoever came, they all came and they just remained in the mat. They did not go back after that. Slowly, it has become a very big mission. And today it has become much bigger. Among them, he is one of the army chief. Everyone preached in their own style. One person who is a very good cook, but he cooks one mixed vegetable sabji. He gives some sugar. He even put some gur. Mixing everything, he makes one nice sabji. Is there any combination with sugar and spice? But they make it that they make both together in the same way. An expert person, they do whatever kind of person is in front. Even they though are against, and later they become disciples and they became the preachers. Those who came to defeat, those who came to fight even. In this way, today is his tithi. So we offer dandavats onto his lotus feet and beg for his causeless mercy upon us. He used to speak very strong Harikatha. He told me 2-3 times in very heavy voice. When he got the place, then he told me that you brought the land from the mouth of lion. Then Srila Bhārati Mahārāja said, it's not me who did that. How it is possible from my side? It is only by the mercy of yours. Because it is the place of your Gurudev. So I got some chance to serve you. Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in Mayapur and preached all over India. And the message of love was preached from Jagannath Puri. And Srila Prabhupada, appearing in Jagannath Puri, took that treasure of love and spread in the whole world.
इसमें हमारा क्या है? So Srila Maharaj told him, what is there in me? I only got the chance to be an instrument and got to serve all you Vaishnavas. संवाद है Now also a good news उसको भी निकाल that those people, those who stay outside the gate, even they are also removed. So it's like the place is very clear for all the Vaishnavas. Thank you very much. Hare Krishna. वही उसी दाना पावने वैष्णवे